Hello kids, welcome to Four Sisters School. Hope you all are safe and sound in your home. Today we will learn maths, comparing numbers on page number 78. First of all, we learn equal. What is equal, dear children? So count with me. 1, 2, 3 and 4. How many triangles are there? There are only 4 triangles. Now 1, 2, 3 and 4. 4 circle also. So the both numbers are equal, 4 and 4. So they both are equal. So equal का साइन कैसे होता है चिल्ड्रंस? ऐसे होता है, राइट? 2 लाइन्स जो होती हैं वो साथ में लगती हैं ऊपर और नीचे, और इक्वल मीन्स दोनों चीजें बोथ साइड्स जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो बोथ इक्वल्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड इक्वल. Now, look at this. Write the number of objects below each collection. Write in the box if both collections are equal. So you have to write the number of the pencils and here and write equal if both collections are equal. So we have to count. Now 1, 2, 3, 4 and 5. How many pencils there are? 5 pencils. Okay. Now the erasers. 1, 2, 3, 4, 5. There are 5 erasers. So dear children, tell me, the both objects are equal? Yes, this is 5 and this is 5. So यहाँ पर हम equal का sign लगाएंगे. Okay. Now next. 1, 2, 3, 4, 5. 5 balls. Okay. And here 1, 2, 3, 4. 4 balls. So tell me, they both are equal? No, they not are equal. So यहाँ पर equal का sign लगाकर ऐसे cut कर देंगे. Okay. It means they not are equal. Now 1, 2, 3, 4. 4 vase. And the roses is 1, 2, 3. 3 roses. This is also not equal. So यहाँ पर भी हम not equal का sign लगाएंगे. Okay. Now count the locks. 1, 2. 2 locks. And key 1, 2. 2 keys. So they both are equal. Yes, they both are equal. So यहाँ पर हम equal का sign लगाएंगे. Dear children, note this. The things which are not equal, so उसमें हम not equal का sign लगाते हैं, जो ऐसे होता है. 2 lines को हम बीच से cut कर देते हैं, that is not equal. Now dear children, come to the page number 79. Less than. Now here we learn less than. So which is less than? Okay. Now Jack has 2 balloons. This is Jack, and he has 2 balloons, and Jill has 5, and this is Jill. She has 5 balloons. So let us write down. So which is less? So Jack के पास less balloons हैं, and Jill के पास 5 balloons है. So Jill के पास ज़्यादा more है, and और जैक के पास लेस बैलून्स हैं. ओके. सो यहाँ पर हम ऐसे साइन लगा देंगे, लेस देन का साइन लगाएंगे. ओके. नाउ लेट अस राइट 1 dot फॉर लेस मोर ऑफ बैलून्स एंड 2 dots फॉर मोर नंबर्स ऑफ बैलून्स. सो 1, 2 दिस इज लेस, एंड 1, 2, 3, 4, 5 दिस इज मोर. सो लेस में आपको 1 dot लगानी है, एंड मोर में यू हैव टू put 2 dots. So ये एक ऐसे less than का sign बनता है, dear children. Okay. Now we shall now write the numbers to join the dots. अब 2 is less than 5. We read it as 2 is less than number 5. So 5 is big and 2 is small. So this sign means less than. Okay. इस sign को हम क्या बोलते हैं, dear children? Less than का sign बोलते हैं. Now for each of these give 1 dot for the smaller number and 2 dots for the bigger number.
and then joined as shown below. So look, 3 में हम 3 is the smallest number, so यहाँ पर हम एक डॉट लगाएंगे, and 7 is a bigger number, so यहाँ पर हम 2 डॉट्स लगाएंगे और then इसको हम ज्वाइन कर देंगे तो ये एक लेस देन का साइन बन जाएगा. सिमिलरली 2 is a smaller number and 4 is a bigger number, so यहाँ पे हम 2 डॉट्स लगाएंगे and इसको डॉट टू डॉट ज्वाइन कर देंगे. सिमिलरली 1 is a smaller number and 6 is a bigger number, so इसको भी हम डॉट्स लगाएंगे, 1 में 1 and 6 में 2 डॉट्स और इन डॉट्स को ज्वाइन कर देंगे. Now come to the page number 80. Greater than means ज़्यादा. Last previous page में हमने पढ़ा is less than and now we will learn greater than. Arun has 4 toffee and Alka has 3. This is Arun and Arun के पास 4 toffees हैं and this is Alka. Alka के पास 3 toffees हैं. So ज़्यादा किसके पास हुई? More toffees किसके पास हुई? अरुण के पास. So यहाँ पर हम ऐसे साइन लगाएंगे. ओके, उसका अपोजिट. स्मॉल नंबर पे 1 डॉट एंड बिग नंबर पे 2 डॉट्स. ओके, लेट अस गिव 2 डॉट्स फॉर अरुण as he has more, we shall give 1 dot for Alka. So अरुण के पास 4 टॉफीज हैं तो यहाँ पर 4 is bigger number than 2. So यहाँ पे इन डॉट्स को ज्वाइन कर दीजिए. Similarly, we shown write the number and join the dots. 4 is greater than number 3. This sign means greater than. Okay. Now for each these give 2 dots for the larger number and 1 dot for the smaller number. Then join the dot as shown below. 7 is a bigger number and 4 is a smaller number. So 7 में 2 dots and 4 is a small number, so उसमें 1 dot देंगे and after this dots को join कर लेंगे. Now 8 is a larger number and 5 is a smaller number, so 5 को 1 dot देंगे and 8 को 2 dots देंगे and then उसको join कर लेंगे. Similarly 9 is a larger number and 3 is a smaller number, so 3 को 1 dot and 9 को 2 डॉट्स देकर इनको ज्वाइन कर देंगे. Now come to the next page. Write the number of objects in each collection in the stars below. Look, these are stars and यहाँ पर आपको नंबर लिखने हैं आपके ऑब्जेक्ट्स के. In the box write and box में आपको साइन लगाना है. This is a greater than sign. Okay. Now, 1, 2, 3. This is 3 bags and 1, 2. This is 2 books. So 3 is greater than 2. Now, count these spoons. 1, 2, 3, 4 and 5. 5 spoons. And 1, 2, 3, 4. 4 cakes. So 5 is greater than 4. Now 1 dog and 2 cats. So 1 is less than 2. 1, 2, 3, 4, 5. 5 mugs and 1, 2, 3, 4. 4 dishes. So 5 is greater than 4. Now next is write the number of objects in each collection in the star below. Similarly जैसे हमने ऊपर किया था वैसे हमें स्टार्स पे नंबर लिखने हैं एंड बॉक्स पे हमें साइन लगाना है यहाँ पर लेस देन का. ओके, नाउ 1, 2, 3, 4, 5. 5 razors and 1, 2, 3, 4, 5, 6 pencils. So 5 is less than 6. 1, 2, 3, 4. 4 vase and 1, 2, 3. 3 flowers. So 4 is greater than 3. Okay, so यहाँ पे greater than का साइन आएगा and 1, 2, 3. 3 lambs. 3 leopards
and 1, 2, 3, 4, 4 owls. So 3 is less than 4. 1, 2, 2 balls, and 1, 2, 3, 3 balls. So 2 is less than 3. So this in this group this is a less than, and in this group this is a greater than. Okay, so ये greater than का ग्रुप था जिसमें ये वाला less than था, और ये less than का ग्रुप है जिसमें ये वाला जो है वो greater than है. Thank you kids, and parents are requested to help their kids to complete their homework and activity and submit in class WhatsApp group by today itself. Thank you.